Let's let's start. Hello everyone. Namaste. My name is Rohit Parak. I am from the Secretariat of National Coalition for Natural Farming. With here today is Vijayanand ji, and the topic that we have for the webinar today is on 16th Finance Commission, understanding a bit more about 16th Finance Commission and the potential for natural farming uh, in 16th Finance Commission. Um, Before I introduce Vijayanand ji, we will also have Hindi translation in the webinar as well. We have Swati, who from NCNF Secretariat, who's joined us. She will be doing the Hindi translation as well. She's also from NCNF Secretariat. We have kept you all on mute. After Vijayanand ji has shared his talk, and the Hindi translation has been done, we will open the floor for questions as well. In the meanwhile, please feel free to share your questions in chat as well. Most of you would know about NCNF, but for those who do not, the National Coalition of Natural Farming was formed 5+ years ago with an intention to scale and strengthen natural farming in various state level coalitions and across the country as well. NCNF works with grassroots organizations, partners, and helps nudge the government policy as well towards natural farming, whilst at the same time trying to strengthen the movement of agroecology in all its various shapes, forms, and practices, and strengthening the movement as well. Now, I'll just briefly introduce Vijayanand ji, and I would request if then maybe Swati could do a translation before Vijayanand ji begins. Vijayanand ji has had a very long and storied career in the field, specifically for rural development, local governance, and decentralized planning. He has been coordinating Kerala's people planning for 15 years since the day it started in 1996. During that time period, he nurtured Kudumbashree, a very well-known SHG program in the country, and also active in molding the Kerala Institute of Local Administration, better known as KILA, in the training of elected representatives as well. He has been with the Rural Development and the Panchayati Raj Ministry, initially as additional Deputy Secretary and Additional Secretary of the Ministry of Rural Development, and later on as the Secretary of Ministry of Panchayati Raj as well. He retired as Chief Secretary of Kerala and also headed the 6th State Finance Commission of Kerala, and is a member of various governing bodies of various NGOs as well. Most recently, he has taken on the role of chairman of Kerala's natural farming mission as well. Before I hand over to Vijayanand ji and request him to share his thoughts on 16th Finance Commission and the potential of natural farming, I would request if Swati ji from NCNF Secretariat, if you could do a brief translation in Hindi. Swati ji? Okay, I assume she's having some issues right now. So maybe I'll initiate with the trans. Yes, Swati ji. Yes. तो अभी जो हमारा रोहित जी ने हमको संबोधन किया है और हमारे विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक खेती को विस्तार देने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हम वर्षों पहले से इसकी शुरुआत की गई थी और एनसीएनएफ राज्य स्तर पर विभिन्न पदों तथा देश भर में इस दिशा में कार्य हो रहा है। एनसीएनएफ जो है जमीनी स्तर के संगठनों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करता है तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को सकारात्मक दिशा देने के लिए सहयोग भी करता है। साथ ही ये विभिन्न प्रकार की तकनीकों के उपयोग और उनके प्रसार के माध्यम को इस आंदोलन को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। अगर हम विजयानंद जी की बात करें तो उन्होंने 1996 में शुरू होने के बाद से 16 वर्षों तक केरल की पीपल्स प्लानिंग प्रक्रिया में का समन्वय किया है।
इस दौरान वे SHG कार्यक्रम से जुड़े एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं और साथ ही केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय में अतिरिक्त उप सचिव तथा अतिरिक्त सचिव के रूप में की है और बाद में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। वे केरल के प्रमुख सचिव के पद में सेवानिवृत्त हुए तथा केरल के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा वे गैर सरकारी संगठनों के कई शासी निकायों के सदस्य भी हैं। हाल ही में इन्होंने केरल के प्राकृतिक खेती मिशन के अध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी संभाली है। अब मैं विजयानंद जी को आमंत्रित करने से पहले हम लोग उनको अनुरोध करेंगे कि वे 16वें वित्त आयोग और प्राकृतिक खेती की संभावना पर अपने विचार हमसे साझा करें। और उससे पहले मैं Yes, thank you. Thank you, Swati ji. And I almost forgot, Vijayanand ji is also on the steering committee of NCNF as well, and he has been guiding the works of NCNF that it engages on the Gram Panchayat Development Plan, the working group that we have on that. Vijayanand ji, the floor is yours. So I'll do a major point which can be summarized, need not be a literal translation. Sure. So the first point is a general introduction. What is a Union Finance Commission? Just for some people who may not be very familiar with it. It's a constitutional mechanism. We have had so far 16 finance commissions. They are set up every 5 years. They are not a permanent body. Normally, it's headed by an expert. The last person was a former Niti Aayog chairperson headed it. Before that was another Niti Aayog chairperson. So, and then it has academics, retired civil servants, 4 or 5 members. They do extensive consultations with the ministries, with the departments. They even go to panchayats in states. They visit all states, take the views of all states, collect data, conduct studies. A very, very elaborate exercise. Probably the best such system in the world in transferring funds from the center to the states. So it was set up essentially for the states because in India, the resources of government of India is more than what it needs. And the state is less than what they need. It is essentially because of the tax structure, resource mobilization structure. So it was decided in the constitution that finance commissions will be set up to recommend to government of India how much they should share from their tax revenues. They're called divisible pool. And it's been different formula have come in different this thing. But one interesting feature is almost, if not all the recommendations of the Union Finance Commissions are accepted by Government of India right from the beginning and immediately implemented. It's not like state finance commissions. Some state finance commissions have never been, even the reports have never come. And most of them, except 5-6 states, they are never operationalized. And except Kerala, it has never been fully operationalized anywhere in the country. So this is a brief introduction of the, one more point, very important point. Union Finance Commission was for the center to states. But when Panchayat Raj and Nagar Palikas were created by the 73rd and 74th Amendment, very wisely, the Constitution was amended to add in the Union Finance Commission, they will suggest measures needed to augment the resources of state. It actually means only what you should do to increase state resources, but that's one of the best things to happen to decentralization. Not one of the best thing to happen to decentralization in India is Union Finance Commissions have been very generous relatively in devolving resources, particularly to the Gram Panchayat. So it started with the 10th Finance Commission. At that time, panchayats were just being set up in the country. So 11th, 12th, 13th took it to a very high level, 13th Finance Commission. 14th Finance Commission took it even to a higher level. I was the Secretary Government of India when the 14th Finance Commission gave the report. They gave 292 crores, lakh crore. So it's a huge amount in 2015 for a 5-year period. So 2 lakh crore is an unimaginable amount. Even I was very shocked, pleasantly shocked as Secretary to get so much resources. At that time, it was exclusively for Gram Panchayats. The 15th Finance Commission gave a good amount, but it did not match with the cost of
value of money, they gave 2.32 lakh crore to the Gram Panchayats. Okay, not a bad amount, but they included so many conditions and also gave what is called a health grant. Panchayats have no control over health institutions. That grant was spent by the health department, and many ministries of government of India started interfering in how the grant should be spent. Now, of course, the 16th Finance Commission has given its report, accepted by government. On budget day, this was laid on the table of the parliament, and it will be effective from 1/4/26. Yeah, now you can summarize. स्वाति जी। विजयानंद जी ने हमें समझाया है और बतलाया है कि ये एक संवैधानिक तंत्र है और अब तक भारत में 16 वित्त आयोग गठित की जा चुकी है और ये हर 5 वर्ष में बनाए जाते हैं और स्थायी निकाय नहीं है। सामान्यतः इनका अध्यक्ष कोई विशेषज्ञ होता है। हाल ही के आयोगों की अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व अध्यक्षों ने भी की है। आयोग में प्रायः शिक्षाविद होते हैं जो सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं तथा 4 से 5 सदस्य भी शामिल होते हैं। वित्त आयोग एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया अपनाता है। यह विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्यों विचार से मतलब इन सभी से विचार विमर्श करता है और पंचायतों तक जाता है, तभी और उसके बाद में सभी राज्यों का दौरा करता है, आंकड़े एकत्रित करता है, डेटा कलेक्शन करता है और उसका स्टडी कराता है। केंद्र से राज्यों को वित्तीय संसाधनों को हस्तांतरण करने की यह विश्व की सबसे सुव्यवस्थित प्रणालियों में से एक मानी जाती है। अगर हम बात करें भारतीय संघीय ढांचे में केंद्र सरकार के पास अपेक्षाकृत बहुत अधिक संसाधन होते हैं, जबकि राज्यों की आवश्यकताएं अधिक होती हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के पास अधिक है मगर राज्यों के पास आवश्यकताएं अधिक है। अगर कर संरचना और संसाधन संग्रह व्यवस्था इसी प्रकार निर्मित है, इसीलिए हमारे संविधान में प्रावधान भी किया गया है कि वित्त आयोग केंद्र सरकार को ये सिफारिश करेगा कि उसके कर राजस्व में राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए। उल्लेखनीय है कि लगभग सभी केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशें प्रारंभ से ही भारत सरकार द्वारा स्वीकार की जा रही हैं और शीघ्र ही लागू भी की जाती हैं। इसके विपरीत कई राज्यों में राज्य वित्त आयोगों की स्थिति उतनी प्रभावी नहीं होती है। कुछ राज्यों में तो उनकी रिपोर्टें भी समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं। जब 73वीं और 74वीं संशोधन लागू कर पंचायती राज संस्थाओं का नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब एक अत्यंत दूरदर्शी कदम उठाते हुए केंद्रीय वित्त आयोग के दायरे में यह प्रावधान जोड़ा गया कि वो अपने राज्यों के संसाधनों को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाए। मतलब आप ये देख सकते हैं कि केंद्रीकरण से फिर विकेंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे लिए रही है। तो केंद्रीय वित्त आयोगों ने विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को संसाधनों के हस्तांतरण में अपेक्षाकृत उदार रुख अपनाया है। तो ये प्रक्रिया अगर हम बात करें तो 10वां वित्त आयोग से प्रारंभ हुई है, जब पंचायतें नई स्थापित हो रही थी और इसके बाद 11वें, 12वें और 13वें वित्त आयोग ने इसे और मजबूत किया है। 13वां वित्त आयोग और विशेष रूप से 14वां वित्त आयोग पंचायत को अभूतपूर्व रूप से संसाधन उपलब्ध कराया है। तो अगर हम 2015 में 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अंतर्गत अगर बात करें तो 2.29 लाख करोड़ रुपए 5 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है, जैसा हमें विजयानंद जी बता रहे हैं। ये राशि अत्यंत विशाल थी और उस समय ये विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के लिए ही निर्धारित की गई थी। ये विकेंद्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और अत्यंत सकारात्मक कदम माना गया। Okay, now one important point which is relevant for today's discussion. When the 14th Finance Commission gave 2 lakh crore, they did not say anything. They just said this money will go to the Gram Panchayats and it can be used for 7 purposes. And agriculture was not included in that 7 purposes at that point of time. So we discussed in Government of India with the state secretaries. All the state secretaries, if there was no policy direction by Government of India, no decision by Government of India, so much money is going to the panchayats and Gram Panchayats. And in many states, Gram Panchayats are very weak. Most states, particularly in Central India, North India, and all that. So to enable the panchayats to spend the resources properly, not a condition, not a conditionality, to have a
participatory planning process. That's very important. Participatory planning process. We called it GPDP as a generic name. States can give its own name. Some states have given its own name. Some states are just calling it GPDP. In Kerala, it was called People's Plan, and that started in 1996. This is not a Kerala model, but a lot of lessons were learned from Kerala by other states. They came to Kerala, studied it, and said what they can do better, what they cannot do, depending on the state. And each state took a cabinet decision, and the states issued the GPDP guidelines, not Government of India. Government of India gave some advisories and built the capacity, but actually each state decided what it can do. They borrowed heavily from the generic methodology of Kerala's People's Plan. Then, I think it was in 21-22, Government of India decided that you will do localizing SDGs as part of GPDP. So you know all the SDGs. Some have a local component, especially poverty, food security, health. So they said localizing SDGs. When the 14th Finance Commission clearly said, you will not, that's a very important point, this time also they have repeated, you will not give any more conditions than what is there in the Finance Commission report. Unfortunately, Government of India tries to give a lot of conditions to the Panchayat. State governments give even more conditions, and district collectors give even more conditions, which is unconstitutional. So that is very, very important. And this has been restated by the 16th Finance Commission in the report. You will not impose any central or state, will not this thing. And then we should remember, this is a legitimate source of funds for Gram Panchayats. It is not somebody's favor. It's a constitutional mechanism of transferring resources from the union to the local governments. So, but unfortunately, many in Government of India don't realize this constitutional, this thing, that Panchayats have some freedom to spend. They keep on writing, you do this, you do that, which is illegal, but nobody has challenged it in the court. It was particularly true during the 15th Finance Commission. 14th Finance Commission was not so bad. But even the Ministry of Panchayat Raj, which is supposed to ensure autonomy, they also gave instructions. Many of you working in the civil society know that as part of SDG, you will have to select 2 sankalps, and each sankalp you can only do what Government of India says in a drop-down menu. It's 100% illegal. You can decide, but they can only say how the framework. You can't say what we will say. You can only choose from that. So that's a very, very important point to be remembered. But of course, Panchayats are very powerless, and they don't protest. They generally try to implement, but they don't implement. They implement what they want. That's very different. That I'll come to that later. So this is the history of GPDP. I'm sure now with the 16th Finance Commission, the ministry must be reworking their instructions. And I hope and pray that they don't issue any directions to Panchayats. They enable the Panchayats to act with responsibility. Okay. तो यहाँ पर विजयानंद जी हमें समझा रहे हैं कि 14वें वित्त आयोग की एक विशेषता थी कि उसने इस राशि के उपयोग पर अधिक कठोर शर्तें नहीं लगाई। केवल 7 व्यापक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें उस समय कृषि शामिल नहीं था। भारत सरकार ने इस धन के उपयोग पर कोई सख्त नीति या हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि राज्यों के सचिवों के साथ में चर्चा करके पंचायतों को सक्षम बनाने पर ध्यान दिया, ताकि वे संसाधनों का सही और प्रभावी तरीके से उपयोग कर सके। ये कोई मतलब बाध्यता नहीं थी, कंडीशनलिटी भी नहीं थी, कि बल्कि पंचायतों की क्षमता निर्माण और सही उपयोग को प्रोत्साहित करने का ये प्रयास था। और इसमें अगर भागीदारी आधारित योजना प्रक्रिया के लिए स्पष्ट परिभाषा और शर्तें बहुत अत्यंत आवश्यक थी, और इस प्रक्रिया को जीपीडीपी कहा गया। तो कुछ राज्यों ने इसे अलग अलग नाम दिया, बल्कि कई राज्यों ने इसे जीपीडीपी ही कहा। केरल में 1966 में इसे पीपल्स प्लानिंग के नाम से लागू किया गया। एक मिनट। और अन्य राज्यों ने केरल के अनुभव का अध्ययन कर यह तय किया क्या वे ये क्या अपना सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य ने अपने मंत्रिमंडल के निर्णय से जीपीडीपी संबंधी
मतलब अपने दिशा निर्देश जारी किए, ये केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि राज्यों ने स्वयं बनाए। हालांकि केरल की जन योजना से काफी प्रेरणा ली गई, और अगर 21 से 22 के बीच की बात करें तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जीपीडीपी के अंतर्गत जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन भी शामिल किया जाए। विशेषकर जो हमारा गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी विषयों पर हमें ध्यान दिया जाए। तो 14वां वित्त आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए, लेकिन व्यवहार में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, यहाँ तक कि जिला कलेक्टरों के अतिरिक्त भी कई नई शर्तें जोड़ी गई जो संवैधानिक भावना के विरुद्ध कही जा सकती है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 16वां वित्त आयोग ने भी इसे पुनः दोहराया है कि पंचायतों पर अनावश्यक और अतिरिक्त शर्तें नहीं थोपी जानी चाहिए, और विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए हमें ऑटोनोमस और स्पष्ट दिशा निर्देश और वास्तविक जन भागीदारी आवश्यक है। Okay. Now coming to the own funds of panchayats. First, we must, as per the Constitution doesn't say what power should be given to panchayats, but uses two basic objectives of panchayat, that is economic development and social justice. And our natural farming will come in economic development. So these are the core mandates. Of course, lot of functions, agriculture, animals, but everything is listed. But that doesn't mean panchayats have to be given by states, and most states have not delegated anything on agriculture to panchayats, except saying that give the seedling and all that, but not real agriculture function has not been delegated, as far as I know, to panchayats. But panchayats have history. They have a position power. And the Constitution uses the word institutions of local self-government. That is a word that is given in the Constitution. Which means, my understanding, having seen Panchayat Raj all over the country, panchayats have certain, what I call position power. Just because they are panchayat, they have a power and they can use it. So, our objective as civil society is to build the capacity, motivate panchayats to utilize what is their power. Of course, if they do a wrong thing, the audit will catch them. So they can't do wrong things or outside the things, but they have their own power, which is more important for natural farming than formal, you do this, you do that, and all that. So that is also a very, very important point. Then, one point that I feel a little disturbed by the 16th Finance Commission report, it says urbanization is the driver of growth, and says all the rural gradually should be linked to the urban local governments, which means convert panchayats into town panchayats, municipalities, and corporations, or add them to them. I personally feel it's not the direction which India should take. You should create facilities in rural areas rather than create facilities in urban areas for people from rural areas to migrate to. I don't know why the Finance Commission has said that. That's what I understood by a quick reading. I'll have to do a deep reading sooner or later. But that is something which I saw. Then another point is, now coming to resources of panchayats, I told they should have, the states are supposed to give them resources, substantial resources from the state funds. Then panchayats are supposed to collect money, and they have the power to collect a lot of taxes which the state delegate. Many states have delegated property tax. Unfortunately, most of the states we are working in, the states have abolished property tax, saying that we will give free to people, and which they are not abolishing, and they don't give any money to panchayat. They just take away the panchayat revenue for populist purposes. And the resource collection by panchayats in central Indian states, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, is abysmal. It's almost nothing. It's almost close to zero. They depend heavily on the Union Finance Commission grant. That shouldn't be. Actually, they should be depending on own resources at least for about 10-15%. Another 40-50% from the state, and remaining from, that's the ideal thing. But in India, they are mostly dependent on the Union Finance Commission. So that, which is why Union Finance Commission grant is very important. So panchayatis have OSR, own source revenue, which is a very, very low this thing. Finance Commission grants, they are not operationalized in most states.
they depend on Union Finance Commission, but they can also depend, it's a Gandhian thing, on people's services, people doing shramdan, contribution in land, kind. So, is very, very important. And then my understanding of panchayats is that there are a lot of things that which I want all of you to note, reflect on. Lot of things panchayats can do for development without actually spending much money. That is why panchayats are there. You're with the people, you can go to the people, motivate them to do certain things, new forms of this thing, transfer technology, or go and take people to the service delivery institutions. So a lot of possibilities are there. So we should exploit the intrinsic power of panchayats. How does the power of panchayat come? From the Gram Sabha. It's a constitutional body. Gram Sabha is a constitutional body, but unfortunately, the attendance in Gram Sabha is pathetic. Mostly they are not held. Somebody signs and it's become a bogus institution. So when you are going to the new Finance Commission period from 1/4, all of us who believe in Panchayat Raj should attempt to strengthen Panchayat Raj and address the weaknesses so far, which I will now, after translation, I will get into. थैंक यू। संविधान के अनुसार हमारी पंचायतों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि उन्हें कौन कौन सी विशिष्ट शक्तियां दी जानी चाहिए, लेकिन दो मूल उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए, आर्थिक विकास और दूसरा सामाजिक विकास। प्राकृतिक खेती सीधे तौर पर आर्थिक विकास के दायरे में आती है, इसलिए यह पंचायतों के मूल दायित्वों से जुड़ी है। हालांकि 11वीं अनुसूची में कृषि, पशुपालन आदि अनेक विषय सूचीबद्ध है, परंतु अधिकांश राज्यों ने वास्तविक कृषि संबंधी अधिकार पंचायतों को पूर्ण रूप से अभी भी डिसॉल्व नहीं किए हैं। बीज या पौध वितरण जैसे सीमित कार्य तो दिए जाते हैं, लेकिन कृषि नीति या कार्यक्रमों का वास्तविक संचालन पंचायतों को नहीं सौंपा गया है। संविधान हमारी पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं तो कहता है, इसका अर्थ यह है कि पंचायतों के पास एक स्वाभाविक नीति, जनशक्ति, पोजीशन पावर होनी चाहिए। सिर्फ पंचायत होने के कारण भी उनके पास सामाजिक तौर पे एक वैधानिक प्रभाव होता है। वो यदि उनकी क्षमता और प्रेरणा बढ़ाई जाए तो वे अपने अधिकारों का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकते हैं। नागरिक समाज की भूमिका यह होनी चाहिए कि पंचायतों को उनकी संवैधानिक शक्तियों के उपयोग के लिए सक्षम और प्रेरित करें। वे मनमाने या अवैध कार्य नहीं कर सकते, लेकिन जो लेखा परीक्षण, जो ऑडिट कानून हमारा व्यवस्था में मौजूद है, लेकिन अपने अधिकार को उपयोग तो कर सकती हैं। प्राकृतिक खेती जैसे कार्यक्रमों के लिए यह स्थिति जनशक्ति औपचारिक आदेशों से अधिक प्रभावी हो सकती है। तो हालांकि अगर 16वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट का एक पक्ष अगर चिंताजनक प्रतीत होता है, जिसमें हम अर्बनाइजेशन को प्रमुख चालक बताया गया है और यह संकेत दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों को धीरे धीरे शहरी निकायों से जोड़ दिया जाना चाहिए। इसका आशय यह है, निकाला जा सकता है कि पंचायतों को क्रमशः शहरी निकायों में परिवर्तित करने की दिशा में सोचा जा रहा है। विजयानंद जी का मत है कि भारत को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो ग्रामीणों क्षेत्र में सुविधाएं विकसित करें, ना कि केवल शहरी क्षेत्रों को मजबूत करें, जिससे ग्रामीण लोग वहां पलायन ना करें। तो पंचायतों के संसाधन के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि राज्यों को पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन देने चाहिए। पंचायतों के पास स्वयं कर लगाने और राजस्व एकत्रित करने की शक्ति है, जैसे संपत्ति कर, जिससे कई राज्यों ने समाप्त कर दिया है। कई राज्यों ने तो संपत्ति कर हटाकर पंचायतों की आय कम कर दी गई, परंतु उसके बदले पर्याप्त अनुदान भी नहीं दिया गया है। अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में पंचायतों की स्वयं आय की बात करें तो बहुत कम है, लगभग अगर नगण्य है। वे मुख्य रूप से केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों पर ही निर्भर है, जो आदर्श स्थिति नहीं है। आदर्श रूप में पंचायतों की आय का लगभग 10 से 15% स्वयं के संसाधनों में, 40 से 50% राज्य सरकार से और शेष केंद्र से आना चाहिए। परंतु वर्तमान में अधिकांश पंचायतें केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर है। साथ ही गांधीवादी दृष्टिकोण के अनुसार पंचायतें जन सहभागिता और श्रम दान के माध्यम से भी संसाधन जुटा सकती हैं। तो इस प्रकार विजयानंद जी का मत है कि पंचायतों को आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की हमें आवश्यकता है। Vijayanand ji, you're on mute. If you can unmute yourself. Yeah, sorry.
for the last 10 years. We have completed 10 years of GPDP. Now it's a time to reflect on what we did and what we didn't do. Unfortunately, panchayats have spent most of the money on cement concrete roads in most parts of India. Of course, the 14th Finance Commission said you can spend it on 7 items. Waste management, stadia, crematoria, all this thing, but nobody said agriculture. But 15th Finance Commission said 40% of the resources is untied. You can use it for anything, but nobody used it for agriculture. No government tried, no central government tried. It was not used. It didn't say don't use it for agriculture. It only said use it for any thing with the panchayat fields. So that was also a missed opportunity. Though a localizing SDGs was taken, it is mostly on water, sanitation, and some kind of green village, but very little on agriculture. Then, on the limited failures of the GPD, not failures, shortcomings. One, it is supposed to be a participatory planning process. It is hardly seen anywhere, not even in 1% of the Gram Panchayats. A real participatory plan coming from below. And how is the participatory plan? Not that people will sit and prepare a plan. It has to be a development status report. This is a development status of the panchayat. And in each sector. And what are our problems? Which is the biggest problem? How do we attend that? What are the priorities? Which is the topmost priority? That kind of exercise has not been done. Even if it is done, it is just for paper they do. Real participatory exercise has not taken place. So Gram Sabha is poor. Participatory exercise is not there. There is no development analysis of what is the situation. And it is just infrastructure oriented. Then it has also been reported all the panchayat plans have to be put in the software of Government of India, Gram Swaraj. But if you look at the software, what is there and what is implemented, they are totally different. And as I told you in the beginning, in many states, the BDO has to approve the plan and BDO will say, you do this. It is not people's will. So this has been then of course, a lot of other problems are there, which for want of time, I cannot get into. But participation is not there. Development understanding is not there. Prioritization is not there. And there is no mix of projects. It's heavily infrastructure oriented. Yeah, I can translate. समय है आत्ममंथन का। हमने क्या किया और क्या नहीं किया। अधिकांश राज्यों ने पंचायतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा सीमेंट, कंक्रीट, सड़कों के निर्माण में खर्च कर दिया। 14वां वित्त आयोग ने व्यय के लिए कुछ प्राथमिक क्षेत्रों जैसे कचरा प्रबंधन, शमशान, स्टेडियम आदि का उल्लेख किया, पर कृषि को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता नहीं दी गई। इसके बाद 15वां वित्त आयोग ने 40% राशि को अनटाइड रखा, अर्थात पंचायतें उसे अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकती थी। फिर भी अधिकांश पंचायतों ने इस अवसर का उपयोग कृषि या प्राकृतिक खेती के लिए नहीं किया। केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में विशेष पहल नहीं की। यह महत्वपूर्ण चूक हुआ। अवसर था, अपॉर्चुनिटी था हमारे पास। हालांकि एसडीजी के स्थानीयकरण की पहल हुई, लेकिन उसका मेन जो जोर था वो जल स्वच्छता पर और हरियाली तक ही सीमित रहा। कृषि पर बहुत कम ध्यान दिया गया। अगर हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की बात करें और उनकी सीमाओं की बात करें, तो जीपीडीपी का उद्देश्य एक वास्तविक भागीदारी आधारित योजना प्रक्रिया था, परंतु देश के बहुत कम, शायद 1% से भी कम ग्राम पंचायतों में वास्तविक जन भागीदारी पर आधारित योजना बन पाई। यह सही जन भागीदारी योजना की शुरुआत विकास स्थिति की रिपोर्ट से होनी चाहिए थी। यानी पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है, प्रत्येक क्षेत्र कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की प्रमुख समस्याएं क्या है, सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, प्राथमिकताएं क्या हो, संसाधनों का क्रमबद्ध उपयोग कैसे हो। व्यवहार में यह प्रक्रिया केवल कामकाजी औपचारिकता बनकर रह गई है। यदि कहीं अभ्यास हुआ तो वह वास्तविक ग्राम सभा आधारित विमर्श के बजाय दस्तावेजी प्रक्रिया तक ही सीमित हो गया है। सारता अगर
वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद वास्तविक भागीदारी, प्राथमिकता निर्धारण और कृषि जैसे मूल क्षेत्रों पर केंद्रित विकास की दिशा गंभीर रूप से अगर देखा जाए तो कम रही है। अब आवश्यकता है कि पंचायतें अपनी संवैधानिक शक्ति और अनटाइड संसाधनों का उपयोग स्थानीय आर्थिक विकास, विशेषकर कृषि और प्राकृतिक खेती के लिए अधिक प्रभावी ढंग से करें। थैंक यू। Okay. Now, coming to the allocation of the 16 Finance Commission, they have given 4,35,236 lakh crore. So it's almost double the 15 Finance Commission. Out of which, about 86,000 or almost 87,000 crore has been given as performance grant. Performance means the panchayat has to collect certain revenue, and they say from the third year you have to collect at least 1,200 rupees per house. If panchayats don't collect it, they will not get this grant. They will get the other grant, what is called basic grant. So 80% of this money is basic grant, 20% is performance grant, 10 performance by state, 10 and other 10 performance by Gram Panchayats. One you should audit and all that. For state, they should give a source of revenue. They should set up finance commissions. So performance conditions have to be met by the state government as well as the panchayat. And so 80% is basic grant and 20% is performance grant. And very interesting thing, that's the most important thing for us. Out of the 80%, 50% has to be spent on sanitation and what they call water management. They don't say water supply. In my first reading and second reading, I could not find what they mean by water management. Unfortunately, many in government of India interpret water management as water supply, drainage and all that. I feel water management should be watershed management. And if that is done, it's a very good resource for our natural farming. It's a 50% of the untied amount. So as I said, 60% is, basic tax, 50% of the basic grant, which is 80%. The remaining 20% of the grant is untied. So out of the total 4,35,236 crores, 60% is untied. So a huge amount. Where can the untied fund be spent? As you all fear, it may go only for roads. But that is very positive thing. The Finance Commission has said you cannot spend more than 20% of this untied fund for roads, which means a lot of money has to be spent on other things for the first time. So we all should rush in the beginning to get commitments from Panchayat for agriculture. You should lobby with agriculture, the state or Panchayat Raj department to say that Panchayats can take agriculture. And maybe you can put some seeding, not that they will distribute everything and it will be go waste. So there's a great opportunity for us to come in. And another thing is Panchayat has to collect own revenues, which has to be 1,200 per household at least. And it has to keep increasing. Therefore, another important thing, Panchayats will be acting responsibly, not getting somebody's money and spending. Their own source will increase. Yet another thing is, finance commissions have to be constituted. If you don't constitute a finance commission, you will not get the money. The state will not get the money. And the elected panchayats have to be there. If elected panchayats are not there, the state will not get the money. And it's big money. I don't think any state can ignore this. And so these kind of conditionalities will ensure the panchayats are able to set apart some money for natural farming directly or indirectly for land development, land watershed management, irrigation, and those kind of infrastructure. Okay. 16वां वित्त आयोग ने लगभग 4,35,236 करोड़ का आवंटन किया है, जो 15वां वित्त आयोग की लगभग 2 गुना है।
तो अगर अनुदान की संरचना देखें तो 80% जो है हमारा बेसिक ग्रांट है और 20% जो है हमारा प्रदर्शन आधारित अनुदान है या परफॉर्मेंस ग्रांट उसको हम बोल सकते हैं। तो लगभग हमारा 86 से 87 करोड़ प्रदर्शन अनुदान के रूप में निर्धारित है। सो अगर हम देखें तो इसमें पंचायत की राजस्व संग्रह नहीं करती तो उसे प्रदर्शन अनुदान नहीं मिलेगा। प्रदर्शन की शर्तें केवल पंचायतों पर ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों के नियमों पर भी लागू हैं। तो राज्यों को अपने स्तर पर राजस्व के स्रोत सुनिश्चित करने होंगे और राज्य वित्त आयोग का गठन भी एवं क्रियान्वयन भी करना होगा। तो विजयानंद जी ने बताया है कि वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान का एक बड़ा हिस्सा अनटाइड फंड का होता है, जिसे पंचायतें अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार खर्च कर सकती हैं। तो ये भी स्पष्ट किया है कि अनटाइड फंड का पूरा उपयोग केवल सड़कों पर ही नहीं किया जा सकता बल्कि इसे कृषि आजीविका और अन्य विकास के कार्यों में भी लगाया जाना चाहिए। इसे पंचायतों को कृषि, प्राकृतिक खेती जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। इसके अलावा पंचायतों को अपनी स्वयं की आय भी बढ़ानी चाहिए, जैसे प्रत्येक परिवार की कम से कम 1200 रुपए प्रति वार्षिक राजस्व का हमें संग्रह करना चाहिए, जिससे पंचायतें अधिक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनेगी। साथ ही राज्य वित्त आयोग का गठन और उनका प्रभावी कार्यान्वयन भी आवश्यक है ताकि पंचायत को पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिल सके और वे अपने विकास कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित कर सके। Okay. Now I said how much they give to total and how much to rural. But I must also tell you, out of the urban grant, which is some 3 lakhs, nearly 60,000 crore, many is also included, which are Gram Panchayats, which are census towns. So actually, Gram Panchayats get more, which are census towns will get money from the urban grant. There is some confusion on that. It will take some time for it to be for it to be cleared. Now, one or two good, other than this, the budget document. Each state has to give a budget document along with the state budget, which shows how much money is flowing to the Gram Panchayat from which are schemes, from Finance Commission, Union Finance Commission, etc. It's a budget document, which means the Panchayat will know exactly how much money they have to get. Now they don't know. So that's a big advantage for us for working with Panchayats, saying that you are getting this money from SFC, from Union Finance Commission, from centrally sponsored schemes, state sponsored schemes. So that is a very, very big this thing. And another great condition, which I mentioned earlier, no additional condition by state or central. So I think you all have to be very active on this. Otherwise, everybody will impose conditions, not only state or central, even by BDO, which I find in most parts of India, it is a BDO who prepares the plan. And Panchayats even don't know anything. That's been experienced right from the beginning. So this small point you can translate. Now I'll get into the what we can do. स्वाति जी, मैं अनम्यूट करना भूल गई थी। 16वां वित्त आयोग के आवंटन में लगभग 60 करोड़ ऐसी श्रेणियां भी शामिल हैं जिनमें ग्राम पंचायतें कुछ शहरी स्वरूप ले चुकी हैं। जो कुछ स्वरूप ले चुके हैं शहरी, जैसे जनगणना नगर आते हैं। तो कई ग्राम पंचायतें जो सेंसस टाउन की श्रेणी में है, जिन्हें शहरी अनुदान से राशि मिलेगी, इस विषय में कुछ भ्रम की स्थिति है जिसे स्पष्ट होने में समय लगेगा। तो दो महत्वपूर्ण अगर सकारात्मक प्रावधान की हम बात करें तो पहला जो है वो राज्य स्तरीय समेकित बजट दस्तावेज है। तो बजट डॉक्यूमेंट की बात करें तो अब प्रत्येक राज्य को अपने वार्षिक बजट के साथ एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसमें स्पष्ट होगा कि ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्तरों से कितनी राशि मिल रही है, केंद्रीय वित्त आयोग से कितनी मिल रही है, राज्य वित्त आयोग, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, राज्य प्रायोजित योजनाएं। अभी तक अधिकांश पंचायतों को इस पर जानकारी नहीं होती थी कि कुल कितनी राशि उनके पास आ रही है। यह प्रावधान पारदर्शिता बढ़ाएगा
और पंचायतों को अपनी वित्तीय स्थिति समझाने में भी मदद करेगा। नागरिक समाज के लिए बड़ा अवसर है कि वे पंचायतों के साथ मिलकर समग्र योजना बनाने में सहयोग प्रदान करें। कोई अतिरिक्त शर्त नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें वित्त आयोग की शर्तों से अतिरिक्त शर्तें जो है वो नहीं लगा सकती हैं। फिर भी व्यवहार में कई बार राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर के अधिकारी, विशेष रूप से जो हमारे बीडीओज होते हैं, ये भी अतिरिक्त दिशा निर्देश देकर योजना प्रक्रिया को कंट्रोल करने लगते हैं। अनेक स्थानों पर यह भी अनुभव रहा है कि बीडीओ योजना खुद ही तैयार कर देता है और पंचायतों को वास्तविक जानकारी या सहभागिता का भी अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए हम सभी को आवश्यक है कि हम सभी सजग रहें ताकि पंचायतों की जो ऑटोनोमस है, जो स्वायत्तता है, वो सुरक्षित रहे और वे वास्तव में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। Okay. The panchayats should take Gram Sabha as their biggest friend and strength, because decisions can be taken in Gram Sabha, not some frightened people. 50-60% of the people of Gram Sabha should come. Now that SHGs are there, if all the SHG women come after discussion, they are told, come to Gram Sabha, they are active, they are articulate. In most parts of India, it covers about 60% of the households. So, SHG Panchayat linkage is now mandatory by policy. So, one of our efforts should be to bring SHGs into the Panchayat Raj. This thing, their guidelines have been issued by Ministry of Panchayat Raj and Ministry of Rural Development. So, operationalizing that is one of the major challenges. Second, this, which is very important for strengthening the Gram Sabha, so that people come. And if you decide in the Gram Sabha, a legal decision in the Gram Sabha, and sometimes you have to fight it out, it's very difficult for somebody to overrule. I recently came across a case study of Maharashtra, where the Gram Sabha decided not to have a toddy shop or arak shop in the Gram Panchayat. Actually, Gram Panchayat has no power. It's under the Excise Act. So the Maharashtra government said, you can't do this. The Panchayat called a Gram Sabha meeting. Almost everybody participated and said, we don't want the arak shop, though it is not under law. And the Panchayat went to the High Court. And the High Court said, though it is not within law, since all people want it expressed through Gram Sabha, the arak shop shall be removed. And the Maharashtra government was forced to remove it. So that's an extreme case. So which means if Gram Sabhas are activated, not easy, then our task becomes easier. And this SHG partnership. So in Hindi you say bade mudde. These are the two important points where you try to activate the Gram Sabha, which can be done better through the SHGs, because SHG women come into this. This is the core before we get into natural farming. Yeah, Swati. ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी शक्ति हमारी ग्राम सभा है। वास्तविक लोकतंत्र और भागीदारी तभी संभव है जब 50 से 60% परिवार ग्राम सभा में उपस्थित हो और निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाए, केवल कुछ जागरूक व्यक्तियों द्वारा नहीं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि एसटी महिलाएं संगठित होकर ग्राम सभा में सक्रिय रूप से भाग ले तो वे स्पष्ट रूप से अपने मुद्दे रख सकती हैं। कई क्षेत्रों में एसटी समुदाय 50 से 60% परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है। अब नीति के स्तर पर एसटी पंचायत जुड़ाव अनिवार्य किया गया है और इस संबंध में पंचायती राज मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती है। नागरिक समाज का एक प्रमुख दायित्व यह होना चाहिए कि एसटी समुदाय की महिलाओं को पंचायत राज व्यवस्था में सक्रिय रूप से जोड़ा जाना चाहिए। ग्राम सभा को सशक्त बनाने का जो महत्व है वो विजयनंद जी ने समझाया है कि यदि ग्राम सभा में विधिवत और बहुमत रूप से निर्णय लिया जाए तो उसे पलटना आसान नहीं होता है। कई बार संघर्ष करना पड़ता है, परंतु ग्राम सभा का वैधानिक निर्णय अत्यंत प्रभावशाली होता है। हाल ही में महाराष्ट्र का एक उदाहरण सामने आया है जहां ग्राम सभा ने सामूहिक निर्णय लेकर ग्राम पंचायत में ताड़ी या शराब की दुकान
न खोलने का प्रस्ताव पारित किया। यह दर्शाता है कि यदि ग्राम सभा सक्रिय और संगठित हो तो वह सामाजिक और विकासात्मक मुद्दों पर ठोस निर्णय ले सकती है। तो पंचायतों की वास्तविक शक्ति उनकी संवैधानिक शक्ति के साथ साथ एक सशक्त, सहभागी और जागरूक ग्राम सभा में भी निहित है। Now, how exactly do this? I can very easily tell you what this kind of things. But first step, ultimately, the demand has to be there in anything. And demand has to come from the farmers. And very importantly, not only from the farmers, from the SHGs and from the agricultural labor. So if you bring all these three, it's a big number. When they go to the Gram Sabha, after being prepared, not just go to the Gram Sabha and suddenly do something. So, yes, CSO, not, I'm sure, even with nearly quite a number of people are here today, about 178. Maybe you represent more than 100 CSOs. But that's my very strong plea and my understanding after being in Government of India and the state. We can't do it in 2.5 lakh panchayats. That is how we started NRLM. I was in Delhi when we started NRLM as Additional Secretary. And India had such a big thing. SHGs were there only in South India and Bihar. How do you penetrate other parts of India? Initially, we didn't know. Then we came out with the idea of a resource block. Select a cluster. Invest all your energies. Get extension, train them, motivate. And they become what is called school of practice. They have actually implemented it. And now do you know how many SHGs are there? More than 1 crore in India. This is all done in, of course, we thought we can do it in 7 years. Maybe it has taken 10 years. But who expected SHGs to be so strong? Of course, there are a lot of problems I can tell you, but this is not the time for discussing the issues to SHGs. So this hub and spoke model alone will work. So don't take more than what you can chew. Go to panchayats which are friendly. How do you select a panchayat? One, of course, it should be in a good agroecological zone which needs natural farming. There's a need for natural farming, which is a good farmer interest. CSO has a working relationship with the farmer or agricultural labor and SHG, all three together, or at least one of them. Then I would say a responsive panchayat, meaning the elected panchayat. And my understanding is women panchayat presidents are more responsive than male panchayat presidents. Generally, for softer development. This has been proved by studies. That women want health, education, child development, elders development more than roads. Everybody wants roads. Now, that problem has been solved by the Finance Commission. They can't spend on roads. So they will be searching for schemes, pitching for agriculture and natural farming, not just agriculture, natural farming. And natural farming for what? So first step is, I can tell you I worked in NCNF now for quite some time. And I've been visiting Andhra Pradesh since 2012 to understand what is there. Initially, it was called community-based sustainable agriculture. It's essentially, you have to tell, now I'm it's a voluntary work, a chair of the National Mission for Natural Farming in Kerala. Very few people know the difference between natural farming and organic farming. So a lot of the people think it's all the same. So in a broad sense, yes, non-chemical thing. But that you are now going to improve the soil biology with least inputs. That the panchayat should understand. So that's the next task after getting the lobbying. Talking to farmers also. That you have to convince them that the yield will not come down. Maybe it will come down for a year, but then it's sustained. There's more of resilience, drought tolerance, there's less of water. So all positive, and obviously very little inputs or no inputs. So farmer stands to gain. But the biggest gain is not in yield, but in the quality of the soil. Then ultimately it will lead to climate improvement and less use of water. And that all, you all know it. I don't want to get into natural farming. But this has to be made very clear to the farmer and more so to the elected representatives.
So I would suggest NCNF will help you prepare a very small module on very simple facts. There is a Vijay Kumar's principles, 9 principles of natural farming, which NCNF upholds. Make it in very simpler local language, local idiom, not the language, not just Hindi. Explain it and say how it is different from other forms of cultivation. And what can you expect? And when I went to Andhra field 2-3 times, the farmers didn't tell me that we are getting much more income. They told me we are more healthy now. Our children are getting nutrition. So the health part of it, the nutrition part of it, the ecology people don't understand much, but now farmers also understand due to climate change and all that. So when you pitch on that and say Panchayat has a role under LSDG, so it's not natural farming because sustainable agriculture is part of LSDG, localizing sustainable goals. So it is within the mandate of Panchayat. And they should get attracted, which means you give them something to read, ask them for an opportunity to address all the elected members together, saying that everybody comes, the weaker sections will come, and talk to them. And you can take, I'm sure NCNF will give it you, some good material from Andhra Pradesh in Hindi, and you can show it. This is it. And that convincing is very important. Otherwise, the government can issue guidelines, you do natural farming, they will not do. So this convincing is very, very, this thing. If these two are done, farmers are convinced, and you know, I don't have to tell you, the Andhra approach is the best. That's what I'm telling Kerala. If you have 1 acre, don't convert 1 acre into natural farm. Do 20 cents, 25 cents. Learn by doing. And then we go to the other thing. I think that should be the big lesson from Andhra Pradesh. If suddenly, though, some problem comes, we will be left shamefaced. We can't afford that. So that is one thing. Second thing which I found based on my short experience in Kerala is that farmers need a troubleshooting mechanism. If something goes wrong, who helps them? The current agriculture department doesn't know. The RD doesn't know. The Panchayat doesn't know. They cannot be left high and dry. So whichever area you are taken, you should, I think NCNF can give you the training for that if required, undertake to provide troubleshooting services. It can be provided by training you. If you can't do that, there should be a mechanism for conveying this to NCNF. NCNF works very closely with the Andhra group and they can give it to you. Or even if required, send a person to the farmer. This is very, very important. You can't leave the farmers in the lurch. So farmers' capacity building is there. Then you tell them, this is assured. Don't go quickly convert whatever you can and learn by doing. And the other important thing is to provide the inputs. And the input part is best done either by the farmer group or, in my view, as has been done in Andhra Pradesh, by the SHGs. See, in any farming, who gains? Only the landowner gains. There are a lot of people with very little land in India. Particularly in my state, nobody has more than 20 cents or 30 cents. So we need to provide equity in natural farming. Equity in natural farming means people with very little land also need to gain. How can they gain? By manufacturing inputs through the SHGs as a micro enterprise. So SHGs get money and they are much more concerned because it's their farmer fraternity. And second method of equity is to get natural farming into the FRA areas, commons, into other lease land farming. In Kudumba, one of the biggest achievements of Kudumbashree women have taken land from, we don't have rich farmers here, but a lot of land is lying waste because people don't cultivate. So they don't even charge much. You just do my land. And if the farmer knows the land will become fertile by natural farming, they will allow even free to the women. So getting land from the richer farmer to the SHGs for collective cultivation, cultivating commons, cultivating the government land, plus of course making them input. So I would like to be very sensitive
on this equity element of natural farming, not that landed per person alone get it. So, Swati, I think I took a longer time. तो पंचायतों में कृषि और प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने की मांग केवल किसानों से ही नहीं बल्कि एसएचजी की महिलाओं और कृषि मजदूरों से भी आनी चाहिए। ये तीनों मिलकर ग्राम सभा को संगठित रूप से भाग ले तो एक बड़ा प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ग्राम सभा में प्रभावी निर्णय के लिए पूर्व तैयारी, स्पष्ट एजेंडा और सामूहिक रणनीति बहुत जरूरी है। इस तरह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने रिसोर्स ब्लॉक मॉडल अपनाकर ये सीमित क्षेत्रों में गहन काम किया है और फिर उसे व्यापक स्तर पर फैलाया है। तो अगर देखा जाए तो संगठित जन मांग हो, तैयारी हो, मॉडल आधारित विस्तार हो, उससे हम सस्टेनेबल जो चेंज की बात कर रहे हैं, टिकाऊ परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो संभव है। तो प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए समस्या समाधान की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। यदि खेती के दौरान कोई समस्या आती है या तुरंत उन्हें मार्गदर्शन और सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कृषि विभाग, पंचायत और अन्य संस्थाओं के पास प्राकृतिक खेती का पर्याप्त अनुभव नहीं है। इसीलिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग की व्यवस्था हो। इस कार्य में अगर बात की जाए, विजयानंद जी ने बहुत जोर दिया है कि एनसीएनएफ में प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और विशेषज्ञ सहायता प्रदान कर सकता है और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों को खेत तक भी ले जाया जा सकता है। किसानों की क्षमता निर्माण और निरंतर सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि वे आत्मविश्वास के साथ प्राकृतिक खेती को अपना सकें और साथ ही किसानों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे धीरे धीरे छोटे क्षेत्र से शुरुआत करें और सीखें। Okay. Now, a question you have asked is, one, of course, I gave the broad role of CSO. Specific role of CSO, I think states will agree. For NREGA, for some time, under the NDA government only, it's not a new policy. Now, of course, NREGA is not there. There will be a new employment guarantee for whatever it is. We don't know now. But it's largely similar to NREGA. The states, of course, will have to pay through their nose. So that's the negative part. Which means, and you're supposed to prepare a plan. It's not called GPDP. It's called, anyway, Village Development Plan. So many of the elements are there. I know many of you may not agree to. Even personally, I don't agree to the new scheme. But nobody can do anything. So we have to make the best use of the new scheme. And you act as what I call cluster facilitation team. Not one NGO. One NGO may not have the resource. So as a small coalition of NGOs with a resource which you have, can you take 5 panchayats, 3 panchayats, 10 panchayats and work intensively on all aspects. So we act as a CFT, which was officially used by Ministry of Rural Development for NREGA, but now I don't think it is. It has not been stopped, but nobody calls CFT. Then, of course, what can farmers expect from the panchayat? Easily irrigation, land development, tree plantation or perennial plantation, not exactly tree, which is very critical in natural farming. Then, I'm not very sure now. I hope states will enable panchayats or motivate panchayats for enterprise support to take up all activities which are permitted under NMNF guidelines. Not that you'll get new things. So a lot of things are permitted by NMNF. So if one line they say, panchayats, if they want to decide, of course, government can't say you should do that. If you want to decide to take up natural farming, follow the NMNF guidelines, which are now available in the state language everywhere. You will have to do that. So this is very, very important for getting panchayats and our work for effective enough. So then I saw a question, of course I'll answer questions later. My request to all of you is that let us not get into debates. Which is better? Is it carbon neutral agriculture? Safe to eat agriculture? Palekar agriculture? Community based? Is it zero budget? Is it regenerative agriculture? We are getting into unnecessary debates.
dividing our energies. In Kerala is the biggest debating society. But everything will be challenged. And they said, Palekar is better, this is better, that is better. Ultimately, I told them, natural farming is a simple word. If you want to look very scientific, call it agroecology. Let's not get into names. And essentially, the principles are clear. Accept the principles. Then small things will come. We'll sort it later. Let us not be very rigid. That's the advice which my friends from Andhra Pradesh gave me. So, all of you CSOs should not get into this is better. I am chair of Pradhan for the last 3 years. I'll be holding the chair for another 2-3 weeks. And Pradhan almost has 2 lakh. They call it regenerative agriculture. But almost, not almost, it is agroecological farm. Zero chemical, zero is the they do, but little bit of addition of some things they do, but no chemical. So we should not get into unnecessary debates with this. The last point on this is the SHG. Somebody asked a question about women farmers. As I mentioned it partially, the SHG women can do a lot of farming. If they don't do farming, they can provide the inputs and they can take land on lease. It can be informal lease. It may not be a registered document at a very small land. Nobody will charge big rent from them. Many of them are unutilizable kind of land. But then Kerala had a very interesting concept which is still active. They called it Green Army, which is many people, see, all said and done, even I don't dare to do natural farming. I have 40 cents of land in the suburbs of Trivandrum. Because it requires very intense kind of thing, which a person having other jobs will not be able to do. So, if somebody is able to provide a turnkey service, till the soil, keep it always wet, keep the different kinds of pre-monsoon, dry sowing, all those things, if somebody knows, not very big thing, also to manufacture the inputs. So, these women groups could be organized into, in Kerala they called it Green Army, not for natural farming, but for organic farming. And they will provide turnkey services. They could have a resource person. Like the entire thing in Andhra is driven by a CRP, community resource person. So, a women's group with a CRP, who's as good as an agricultural officer, with freedom to clarify doubts. Not that they'll be left alone and to their thing, would be an ideal solution for equity, for extension. Agriculture department, I am sure, doesn't know these kind of things. In Kerala, only about 10 or about 100 people out of 2,000 people know this in depth. So you'll also face this thing. So if you do this kind of thing, this women farmer, SHG, everything will be sorted out. So I've given most of my points. After you translate this, I'll conclude with some remarks and then answer questions. हाँ, प्राकृतिक खेती में जो शुरुआत में उत्पादन कम दिख सकता है, लागत घटती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है, पानी की बचत भी होती है और स्वास्थ्य और पोषण व जलवायु पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे किसानों और जनप्रतिनिधियों को सरल भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। तो एनसीएनएफ को सुभाष पालेकर के 9 सिद्धांतों पर आधारित एक छोटा स्थानीय भाषा का मॉड्यूल बनाना चाहिए, जिसमें आय, लागत, स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभ स्पष्ट हो। आंध्र प्रदेश के अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं। प्राकृतिक खेती को केवल तकनीक नहीं है, बल्कि पंचायतों के वैधानिक दायित्व, सतत कृषि और स्थानीय एसडीजी से जोड़कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भले ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एनआरजीए में अधिनियम का स्वरूप बदले, रोजगार योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई, भूमि विकास, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे कार्य पहले से अनुमत है, जो प्राकृतिक खेती के लिए उपयोगी है। तो नागरिक समाज को हम क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम जो सीएफटी की तरह 3 से 10 पंचायतों में संगठित गहन कार्य करना चाहिए। यदि ग्राम सभा निर्णय ले तो पंचायत वैधानिक रूप से इन प्राथमिकताओं को लागू कर सकती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो समूह की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे खेती करें या खेती के लिए आवश्यक इनपुट तैयार करें, लीज पर भूमि लेकर सामूहिक खेती करें या किसानों को सेवाएं प्रदान करें। केरल के ग्रीन आर्मी मॉडल की तरह महिला की
महिला समूह किसानों की पूरी सेवा दे सकते हैं, जैसे मिट्टी प्रबंधन हुआ, इनपुट निर्माण हुआ और तकनीकी सहयोग। आंध्र प्रदेश मॉडल में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो किसान को प्रशिक्षण और समस्या समाधान में सहायता करते हैं। इसी तरह प्रशिक्षित महिला समूह और स्थानीय संसाधन व्यक्ति प्राकृतिक खेती के विस्तार में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। समग्र रूप से अगर कहा जाए तो समूह, पंचायत और प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों के सहयोग से प्राकृतिक खेती को मजबूत, व्यवहारिक और टिकाऊ विस्तार से बना पाना संभव है। Okay, now we have covered. Today's thing was not to do everything, but to motivate you and to convince you that we can do it. There is a space, big space, but it is not automatically available. We have to seek it. We have to go and get it. A lot of lobbying, advocacy at different levels. Small NGOs can do it at local level. Bigger NGOs can do it at state level. Fortunately, NCNF has all the big NGOs and they have very good relations with the state. Particularly, Andhra Pradesh RYSS has tied up with Ministry of Rural Development. So that's one point I wanted to tell you. Part of it could be under NRLM, though NRLM is not under Panchayats. So NRLM has a tie-up with RYSS to say they will do natural farming. So use that advantage also. Don't separate NRLM from Panchayat and say this will be different, because SHGs and Panchayat have to work together. So look at the resource envelope, which is directly under the Panchayat, which Panchayat can access. So NRLM is something which Panchayats can access and benefit. So you should not see it in a narrow, this thing. NMNF resource also will come. So we see it as a resource envelope. Certain thing will be done by Panchayats, certain will be done along with Panchayats. So that kind of what I call mapping should be done. Then, as to come back to the original point, the farmer demand. And if farmer demand is there, the Panchayat will respond. But ever since Panchayat Raj was set up, there's hardly any relationship between the Panchayat and the farmer, Panchayat and the agricultural labor. So this is the task of mobilizing them and getting an interface. Let the Panchayat, if you can motivate the Panchayats to call a farmers Gram Sabha, agriculture Gram Sabha, where you get all the agriculture workers and farmers and speak about NF, and then there itself. And all of a sudden, Panchayats are happy with meeting their voters. So if they come in a big way, just for discussion, not demand-based, that will help. So try all these things of that. Then, of course, I'm only reiterating the points I've made earlier. The equity part, the assured support system part, which is not there now. Agriculture Department cannot provide it for some more time in spite of all the training. Then, of course, there will be a lot of farmer master trainers in your locality. Get them on board, and the institutions and all that. So it's a big thing. And then another thing is my personal view. I don't want you to agree to it. A lot of us criticize Green Revolution. Yes, Green Revolution has brought a lot of negatives. But I lived in the 60s. And India was on the verge of starvation. And not deaths of 1 or 10, in deaths of millions. So at that point of time, we didn't have any other alternative. We didn't know also. So a lot of people I find even in Kerala blaming this thing. It is what created, we should have done natural farming 60 years ago. Whether we could have or not, I'm not getting into. But what Swaminathan said, I would request you to do, from Green Revolution to Evergreen Revolution. Learning from the mistakes. We did make mistakes. And we want to avoid that in future for a sustainable agriculture. And we are following the step-by-step approach, not rushing to natural farming all over India. It's a very, very small effort we will do. And if Panchayats come, why should they come? It's their area development. Panchayat will ask, where is the GO? Where is the circular? This doesn't require a circular. It is your area development. It is constitutionally for local economic development. So with this kind of thing, hoping on the intrinsic power of the Panchayat for local economic development, I'm sure we'll be able to achieve. But I can also give you an assurance. Unfortunately, Naren had a calamity in the family, a close relative passed away. He couldn't come. But we can arrange a regular interaction with you so that those who are tried Panchayats, not all of you will go and try Panchayats. There'll be a lot of problems right ab initio.
record the problems. We'll ask NCNF to put in a system whereby you can give feedback, and wherever I am required, maybe once in 2 weeks or something, I am willing to give very specific replies. Again, there's no need for a general talk. You have this problem, how to sort it out. Maybe all may not be, you cannot sort it out, but we can certain. So let me conclude here. I'll request Swati to do this. विकास और प्राकृतिक खेती के लिए स्थान तो मौजूद है, बहुत अच्छे से हमें इसके बारे में समझाया गया है, लेकिन वो हमें ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसे एडवोकेसी और संगठित प्रयासों से हासिल करना पड़ेगा। तो इसमें विजयानंद जी ने हमें सलाह दी है कि छोटे एनजीओ स्थानीय स्तर पर सक्रिय हो, बड़े एनजीओ जो है सीएसओ हैं वो राज्य स्तर पर नीति संवाद करें और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय को मजबूत किया जाए। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को, तो पंचायतों से उसको अलग ना देखें, समूहों और पंचायतों का तालमेल जरूरी है और एनआरएलएम संसाधन का एक लिफाफा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसे पंचायत योजनाओं के साथ मैप करके समेकित रूप से उपयोग किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि किसानों, कृषि मजदूरों और समूहों की संगठित भागीदारी, यदि वे बड़ी संख्या में ग्राम सभा में आए चर्चा के लिए भी, तो पंचायतें अधिक उत्तरदायी बनेंगी। पंचायत और किसानों के बीच संबंध मजबूत करना सरकार को, नागरिक समाज दोनों की जिम्मेदारी है। तो प्राकृतिक खेती के लिए अभी संपूर्ण समर्थन तंत्र हमारा विकसित नहीं है। इसके लिए स्थानीय मास्टर्स, हमारे संस्थानों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को, जो हमारे सीआरपीज हैं, उन व्यक्तियों को जोड़ना बहुत अधिक आवश्यक है। जहां तक हम ग्रीन रेवोल्यूशन का सवाल है, उसने अपने समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई, मगर आज जो हम चुनौतियां झेल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, मृदा क्षरण, स्वास्थ्य संकट, अलग अलग तरीके की, इसलिए प्राकृतिक खेती को अतीत की आलोचना नहीं बल्कि भविष्य में समाधान के रूप में प्रस्तुत करना और अधिक समाधान के रूप में प्रस्तुत करना अधिक सकारात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण है। विजयानंद जी ने यह भी बताया है कि अगर हम ग्रीन रेगुलेशन की कुछ सीख ले तो एवरग्रीन रेगुलेशन हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रीन रेगुलेशन ने हमारे प्रकृति को बहुत क्षति पहुंचाई है। तो पिछली गलतियों से बचते हुए टिकाऊ और स्थायी कृषि प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। इसके लिए प्राकृतिक खेती को पूरे देश में एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और जोर दिया जा रहा है कि पंचायतों का मुख्य दायित्व स्थानीय आर्थिक विकास, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और प्राकृतिक खेती इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर है। Yeah, I think I will address some of the questions which have already come in the chat box. Just give me a couple of minutes. चर्चा के लिए अभी हमारा मंच खुला है। आप सभी अपने अपने प्रश्नों को सबके सामने रख सकते हैं। Yeah, I'll just answer some questions which I didn't address. First is FRA and panchayats. Panchayats have a role in FRA. FRA becomes denotified as a forest, and it is just like people's land. And more in PESA areas where you have a PESA obligation also. Panchayat should get into it. Sooner or later, they should get. They can use the NCNF new version for that. And Panchayats have a role in getting titles to this. Panchayat president is a member, Gram Sabha meets. So they have a role, but many places they have actually not a athlete. Then somebody asked about recognition. The biggest recognition a Panchayat gets is that I've actually talked to a lot of Panchayat presidents. Most Panchayat, we say Panchayats are corrupt. No doubt about it. But more than corruption, what Panchayat president wants is recognition. That I have done this for the first time in my village. And so many people have. So you work on that. You will get recognition if you work. And Panchayat presidents may look like they are not politicians, but they are politicians, budding politicians. So politicians want a
a kind of contact with the people. They enjoy that. And as far as women politicians may not be very confident, but they feel working with the people gives them an energy. Particularly, there's a Didihood between the women elected member and the SHG. So these are ways of getting this. So that recognition is more important. No doubt, I think NCNF later can consider some outstanding panchayat could be models and then give a recognition and all that. Yeah, that is one thing. Then that Viksit Bharat and this thing, I think it's still in the act. They will come out with detail this thing, but by and large, it is Gram Panchayat Development. It may come in a new name. It will be development, which will have this element. And since NMNF is a policy of central government, they will not say don't do it. That's my guess. Of course, distributing seedlings and other things may not be allowed under the new scheme, but land development, irrigation, whatever was done under, and especially for small farmer, will be done. It can be combined with this. Then, of course, E-Gram Swaraj has some problems. Probably they will be redesigning it for the new 16th Finance Commission. Then carbon credit and this thing, we'll go for carbon credit slowly. It's very, very cumbersome. So we should have it at the back of the mind. Carbon credit for Gram Panchayats will be a great idea, but I think it's too this thing. Similarly, certification. Certification for participatory certification, government itself is providing. I saw a national workshop in Trivandrum last week. So a Vice Chancellor from Himachal University explained it. And there's a national center for organic farming, I think Ghaziabad. They have also a lot of this thing. I'm sure NCNF will collect that and give it to you. But that is not the immediate thing. To get started is the most important thing. So I request all of you to get started. And we don't stop here. This is an introduction. Don't think you can do it in 2 hours or 1.5 hours. This is an introduction. I want you to realize that we can do it. Or we will try to do it. Not that we can do it. We should do it. And there, I can tell you there will be 100 problems or even more. But if you're willing to confront them, there could be solutions at least to 60 problems, which we can find. And let this be a work together, NCNF and the civil society organizations. Ultimately, we'll get the state governments on board. Now, if you have any questions, you can ask me. I've answered all the questions which have come in the chat box. स्वाति जी, अगर आप translate कर सके. Yes. No, I can understand Hindi questions. If I don't understand, I'll ask. No, I was referring her to translate Yeah, what he just what said I now. did. Okay. So, विजयानंद जी ने आज के पूरी चर्चा को संबोधित करते हुए कहा है कि पंचायत के लिए सबसे बड़ा सम्मान बाहरी पुरस्कार नहीं बल्कि गांव के लोगों की ही पहचान और विश्वास है। यदि पंचायत वास्तविक काम करती है तो उसे स्वाभाविक रूप से सामाजिक मान्यता मिलती है। जनप्रतिनिधि चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं, लोगों से जुड़ाव और संवाद होना चाहिए। विशेष रूप से महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को यदि समुदाय का सहयोग और ऊर्जा मिले तो उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व दोनों ही मजबूत होंगे। भविष्य में उत्कृष्ट पंचायतों को मॉडल रूप में पहचान दी जा सकती है, पर अभी भी प्राथमिकता जमीनी काम से शुरू करना है, केवल कागजों तक ही नहीं सीमित रखना है। वित्तीय दृष्टि से ग्राम पंचायत विकास का तत्व भी बना रहेगा। भूमि विकास, सिंचाई और छोटे किसानों के लिए परिसंपत्ति निर्माण जैसे कार्य जारी रह सकते हैं। भले नई योजनाओं का स्वरूप बदले, 16वां वित्त आयोग के संदर्भ में योजनाओं का पुनः डिजाइन भी संभव है। कार्बन क्रेडिट जैसे विकल्प भविष्य में ग्राम पंचायतों के लिए अवसर हो सकते हैं, पर अभी भी यह प्रारंभिक अवस्था में ही है। इस प्रकार प्रमाणन, हम जो सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम सहभागी प्रमाणन की बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेशन की दिशा में भी पर्याप्त प्रयास हो रहे हैं। जैसे हमारा अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र हरियाणा जैसी संस्थाएं भी इस पर जोर शोर से काम कर रही है। लेकिन इस जटिल प्रक्रियाओं में उलझने से पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि शुरुआत करना, पंचायतों को सक्रिय करना और ग्राम सभा को मजबूत बनाना। पहचान, संसाधन और अन्य अवसर बाद में स्वतः ही विकसित होने लगेंगे। Okay, anyway, I enjoyed talking to all of you. There are urgent, I think most of the questions I've answered. As I mentioned, this shall be the beginning of a series of communication to clear doubts and get to action. So today you can go back and talk, do a recce of the panchayats you are working with it, try to apply what I told you, and then
you'll face issues, come back with issues. But today I'll answer some questions, some 4-5 questions if you have any questions, specific questions. Vijayanand ji, maybe I'll take a couple based on what I've received so far. The first question was getting into a few more specifics of natural farming itself. So let's say, would an organization, NGO, which is getting into natural farming, would they be able to get some funding for BRCs, seed bank, etc. related things, if they want to do natural farming via Gram Panchayat as part of Yes, the if it is allowed in the guidelines, that's very important. That they may not give it to an NGO. That's very unlikely. That to allow Panchayat to give it to an NGO, but they may give it to an SHG group under NRL. So the SHG group we train the SHG group, which is as good as funding an NGO. Our expenditure is small, but direct funding to NGO is very unlikely unless Government of India adopts the CFT approach, which I don't anticipate, though we have all been advocating for a long time for GPDP, there should be a CFT. And our Pradhan works as a CFT in many, I think, Gram Panchayats, but that is using their resources. And that is the kind. स्वाति जी, आप 2-3 क्वेश्चन एक साथ ट्रांसलेट करेंगी या? Then my request to my CSO friends is, when you are seeking funding, seek fund only for the support services to the Gram Panchayats. The core of the thing Gram Panchayat should fund. So you can eke out your resources. मैं कर देती हूँ एक साथ में, या फिर आप जैसा बोले? नहीं, एक एक करके कर लेते हैं। ठीक है, तो एकीकृत खेती या मॉडल के फॉर्म के स्तर पर जो हमारे बीआरसी जैसी संरचनाओं को वित्त मिल सकता है, तो यदि वह संबंधित योजना के दिशा निर्देशों में अनुमत हो, तो पहले ये देखना जरूरी है कि गतिविधि मनरेगा, रोजगार योजना, जीपीडीपी या अन्य योजना में स्वीकृत है कि नहीं। तो सीधे एनजीओ को पंचायत से फंड मिलना कठिन है, इतना आसान नहीं है। अधिक संभावना यह है कि पंचायतों समूह जो एसआरएलएम के अंतर्गत है उनको समर्थन दे, एसएचजी को प्रशिक्षण व संसाधन दिए जाए, पंचायत और समूह मिलकर मॉडल विकसित करें। एनजीओ की भूमिका प्रत्यक्ष फंड लेने की बजाय तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण और क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम, सीएफटी जैसी सुविधाएं प्रदान करने की भी हो सकती है। यदि केंद्र सरकार औपचारिक रूप से सीएफटी मॉडल अपनाए तो बात अलग है, पर अभी भी यह अधिकतर स्थानीय संसाधनों और साझेदारी पर ही निर्भर रहेगा। तो मुख्य बात यह है कि फंडिंग से पहले दिशा निर्देश देखें, पंचायत समूह की साझेदारी बनाए और एनजीओ को सहयोगी सुविधा दाता की भूमिका में ही रखें। Yeah, one point I left out, I missed, that is the Finance Commission has formally said there should be a learning management system, just capacity building, another word, for panchayats and urban local governments to be set up by the Ministry of Urban Development and this thing. So something will happen in capacity building. We should lobby to get natural farming, commons, and these kind of ecological concept also into the capacity building. Otherwise, the capacity building will be only on infrastructure, housing, and sanitation. So that is another important. Then I didn't touch urban local governments, but urban local governments, there is no equivalent of a Ward Sabha. It is just in the coming. So urban local government is a different cup of tea. We cannot apply any of what I said into urban local government kind of thing, which is why I consciously did not touch. Yeah, this you can. Then also one more point, somebody has asked about corruption. So my thing is, the only solution to corruption is participation of the people. Formal systems have their own limits. I've been watching it in Kerala since 30 years now. There is corruption, but the more participatory, more transparency, and their participation comes down. But where, this is something I noticed, where panchayats are not told that this is your mandate, and money is given to them, they will be corrupt. But if panchayats are feeling that they are doing a task for their village, they are almost corruption free. Yes. स्वाति जी, आप म्यूट पे हैं, कुछ कह रहे थे।
तो वित्त आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आधारित क्षमता निर्माण व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। यह पहल राज्य और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से लागू होगी। तो इसमें अवसर यह है कि हम लॉबिंग करके प्राकृतिक खेती, साझा संसाधन, पारिस्थितिकी और सतत कृषि जैसे विषयों को भी क्षमता निर्माण मॉड्यूल में शामिल करवाएं। अन्यथा प्रशिक्षण केवल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या आवास या स्वच्छता तक ही सीमित रह जाएगी। तो जहां तक शहरी स्थानीय निकायों का प्रश्न है, वहां ग्राम सभा जैसी प्रत्यक्ष जन भागीदारी की समान संरचना नहीं होती। इसलिए शहरी क्षेत्र में नागरिक सहभागिता के अलग तंत्र विकसित करने की हमें आवश्यकता है। तो भ्रष्टाचार का सबसे प्रभावी जो समाधान है, जन भागीदारी और पारदर्शिता। यदि पारदर्शिता हो तो अनुभव हमारे बताता है कि पंचायतों में लोगों की सक्रिय भागीदारी, खुली चर्चा, सामाजिक निगरानी होती है तो भ्रष्टाचार अपने आप ही कम हो जाता है। प्रणालियों की सीमाएं अपनी ही होती है, पर सहभागिता उन्हें अधिक उत्तरदायी बनाती है। जहां पंचायतों को केवल धन खर्च करने वाली इकाई की तरह देखा जाता है और उनके स्पष्ट दायित्व नहीं बताए जाते, वहां भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ने लगती है। लेकिन जब पंचायतें स्वयं को अपने गांव के विकास का जिम्मेदार संस्था मानती है और समुदाय के साथ मिलकर कार्य करती है, तो लगभग वे भ्रष्टाचार मुक्त होकर काम करती है। तो विजयानंद जी का मुख्य संदेश था कि पंचायतों को उनका वैधानिक दायित्व स्पष्ट करना है और ग्राम सभा के माध्यम से जन भागीदारी बढ़ाना ही हमारे सुशासन की कुंजी है। Yeah, one last question remark. I'll stop with that. I saw, is it a premium product? I'm not a farmer, so I cannot tell you. But if you position it as a premium product, farmer disappointment is sure. So in Kerala, I've been telling this is not a premium product. It becomes automatically a premium product once people know the thing. Otherwise, if we position and say we will procure, we will give you 60 rupees per kilo of rice and all that, it may not work. And far past experience of creating premium products have not been very successful. I know the Kerala experience in detail, but maybe other states. So we will not say, but I'm sure Rohit can circulate the Andhra Pradesh results, which clearly say the cost of cultivation is coming down sharply. Maybe even if the price is not very different, they still make a saving. And it's a saving, don't take it for 1 year. We take it 5-6 years, the saving will be huge on irrigation, everything. And also crop loss, everything will be. So you have to take a little holistic view on that. So thanks a lot. I enjoyed it and I hope it's a beginning and we will continue the dialogue. And Rohit, all the participants, I would request you to keep track of them to say how many tried, how many acres, what are the problems and all that. We will do our own lobbying, whatever it's worth, with the policymakers, with NARDPR and others, so that at least there's a permission, at least there's a mention that natural farming could be one activity under the GPDP. Absolutely, So, Vijayanand. Vijayanand, there are a few more questions as well. Yeah, please. If you have time. Yeah, Swati ji, if you can translate and then we can get to the... You're on mute. आप म्यूट पे. हाँ. सो एक्चुअली प्राकृतिक खेती को शुरुआत में प्रीमियम उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करना जोखिमपूर्ण हो सकता है यदि किसानों से कहा जाए कि उन्हें निश्चित रूप से अधिक मूल्य जैसे 60 रुपए प्रति किलो चावल मिलेगा या ऐसा ना हो पाए तो निराशा तय है। तो अनुभव विशेषकर केरला में ये दिखाता है कि कृत्रिम रूप से प्रीमियम बाजार बनाना आसान नहीं है, कि बेहतर ये है कि प्राकृतिक खेती को पहले लागत घटाने और जोखिम कम करने के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए। और हमारे आंध्र प्रदेश के अनुभव ये बताते हैं कि खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है, सिंचाई, बाहरी इनपुट और फसल हानि का खर्चा घटता है। भले बाजार मूल्य अधिक ना बढ़े, फिर भी शुद्ध बचत होती है। इसलिए 1 वर्ष के लाभ के बजाय 5 से 6 वर्षों के समग्र होलिस्टिक हमको दृष्टिकोण में देखना चाहिए। दीर्घ काल में कम लागत, कम जोखिम और बेहतर स्थिरता ही वास्तविक लाभ है। प्रीमियम मूल्य अपने आप में समय के साथ बन जाता है। Yeah, one question which has come, I think probably somebody from Kerala, that is urea subsidy equivalent to be given for natural farming. I personally feel, but whether that kind of big policy decision will be taken, I'm not very sure. But if it takes off as we dream it can, then probably instead of subsidy, some more kind of
inputs and others will fall into place. As of now, it looks too early. Yeah. Any questions? One or two questions I can answer. Some Yeah. other. So Vijayanand ji, on RKVY, which is where now NMNF will fall under, we understand that in the 16th Finance Commission, rather than it being expenditure based, it will move towards performance and reform based as well. And 30% of that will come under reform. So how do we ensure that the reform based and the performance based works out well? Should we be syncing up with the union government on what are the criteria for reform and performance based for NMNF? See, I've been in this system for a long time. This performance-based is more a dream and an objective rather than very specific. It's very difficult to link expenditure to performance, except by improving the processes, not by any other management technique. Like Andhra's expenditure, if you take and the results, is fantastic. But nobody made it a performance-based funding. You get into very silly calculations with performance-based funding, a lot of fudging, cheating, and this thing. But that is a very natural thing. Involve the people, community does it. It's transparent, you know what is happening. Then performance, is a proud farmer who did it. Even Green Revolution, when we went from practically no food to hundreds of tons, there was no performance-based funding, but performance focus should be there. Funding and performance relation is very difficult. I don't know how they will do it, but that is my. I saw your question which you sent it to me today morning. That's why. And would it come from? I'm assuming it will come from union government rather than state governments. Yeah, sending yes, it, right? It is a union government. We'll give some guidelines. It's a very difficult process. Right. Yeah. Swati ji. मैं तब तक ही ट्रांसलेट कर देता हूँ संक्षिप्त में। तो विजयानंद, हाँ स्वाति जी प्लीज। और उसी बीच में और भी पार्टिसिपेंट्स अगर कोई एक दो और सवाल पूछना चाह रहे हैं हमारे विजयानंद जी के पास थोड़ा सा समय है तो आप हाथ रेस कर सकते हैं और फिर अनम्यूट कर सकते हैं। स्वाति जी ट्रांसलेट कर दे उसके बाद। जी स्वाति जी। तो प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक चरण में ये मैं पिछला भी कर रही हूँ क्योंकि इसके पहले हम नहीं कर पाए थे चर्चा, पिछले प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक चरण में सब्सिडी समतुल्य समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। तो ये जो प्रत्यक्ष नगद सब्सिडी ना होकर इनपुट सहायता होना चाहिए। तो इसमें नीतिगत निर्णय कब और कैसे लिया जाएगा ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो मतलब फिलहाल में थोड़ा जल्दबाजी जैसा विषय लगता है। तो भविष्य में प्राकृतिक खेती का व्यापक रूप से सफल होती है तो पारंपरिक सब्सिडी के बजाय प्रशिक्षण, सामुदायिक केंद्र, संसाधन केंद्र जो है, स्थानीय बाजार समर्थन है, जल एवं भूमि विकास कार्यों के लिए सार्वजनिक निवेश जैसे उपाय अधिक व्यवहारिक और राजनीतिक रूप से स्वीकार विकल्प हमारा बन सकता है। तो अभी हम अगर प्रायोरिटी देखें तो अभी हमें इस मॉडल को मजबूत बनाना है, परिणाम दिखाना है और धीरे धीरे नीति समर्थन के लिए अपना आधार तैयार करना है। और इसके बाद में जो अंतिम सब्सिडी फंडिंग मॉडल हो सकता है और इसे व्यवहारिक रूप से कैसे कामयाब बनाया जाए, ये हमारा अगर देखा जाए तो सिद्धांत बनाम व्यवहार की बात है कि परफॉर्मेंस आधारित फंडिंग सुनने में तो आकर्षक लगती है पर व्यवहार में इसे लागू करना बहुत कठिन है। व्यय को सीधे परिणाम से जोड़ना तकनीकी रूप से बहुत कठिन कार्य है। अक्सर इसमें जटिल गणनाएं, कागजी रिपोर्टिंग और कभी कभी फंडिंग की मतलब फर्जिंग की कभी संभावनाएं बढ़ जाती है। वास्तविक बदलाव प्रबंधन तकनीक से नहीं बल्कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट से और सामुदायिक भागीदारी से होगा। तो प्रक्रिया सुधार करना है और सामुदायिक भागीदारी हमें बढ़ानी होगी। तो उदाहरण के तौर पे आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक खेती के परिणाम उत्कृष्ट रहे लेकिन उसे औपचारिक रूप से नहीं जोड़ा गया था, फिर भी परिणाम आए क्योंकि समुदाय उसमें जुड़ा था। तो सुधार आधारित अगर दूसरी बात करें तो दृष्टिकोण कैसे काम करे, तो इसमें अगर लागू करना हो तो ध्यान इन बिंदुओं पर होना चाहिए कि हमारी प्रक्रिया संकेतक क्या है, प्रोसेस इंडिकेटर क्या है, पारदर्शिता कैसी है और सामुदायिक स्वामित्व कैसा है। क्या सरकार हमारी तालमेल केंद्र सरकार से तालमेल जरूरी है, तो बिल्कुल हमें
व्यापक दिशा निर्देश अक्सर संघ स्तर से ही आते हैं। फंडिंग को कठोर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से जोड़ना बहुत जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रिया है। हमें व्यवहारिक रास्ता भी अपनाना होगा। जैसे हरित क्रांति के समय उत्पादन बढ़ा है, वो औपचारिक रूप से नहीं बल्कि नीति फोकस और संस्थागत समर्थन से हुआ है। तो हमें व्यवहारिक रास्ता देखना होगा कि हम किस तरीके से परफॉर्मेंस आधारित फंडिंग एक आदर्श लक्ष्य हो सकता है, पर वास्तविक परिवर्तन सहभागिता, पारदर्शिता और प्रक्रिया सुधार से ही आ पाएगा। कोई और, if anybody has any questions, please do feel free to unmute yourself and raise those questions. अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो आप एक दो सवाल हम ले सकते हैं. Can I ask a question about the subsidy? If we can focus it more on the 16th Finance Commission, that would be better. I'll answer this question on subsidy also. Sure. Yeah, my question is with respect. I was attending one conference where natural farmers, this thing was there. So one farmer explicitly asked this question: being in natural farming, they don't get any subsidy. That's fine with respect to ROSS model. But then his question was explicitly with respect to what the chemical farmer gets. He actually gets subsidy in terms of urea costing and all that. So why don't he give it to us? That was his question. So I can only go by the Andhra experience. They consciously took a decision not to give farmer subsidy, but they gave a revolving fund. So nobody has tried giving subsidy to this thing. But in Kerala, for the people's plan, we are suggesting, it's not been agreed, whatever funding pattern is there in NMNF, and there is some subsidy for organic farming, the same subsidy can be given to farmers under natural farming. It has to be approved by government. That is some seed, some fertilizer kind of thing. An equivalent amount has to be, that's only for Kerala. But for the rest of India, I'm not aware of anything other than the NMNF guidelines. Yeah, because my take is like the central government, basically it's riding on two horses. So people are confused, or rather they're not incentivized to move to natural farming. That was my take. I agree, but those who start don't go back. Not only there, I've got some feedback from Himachal and other Odisha and all that. Those who start don't go back. Yeah, because but I fully agree with you that some kind of assistance is required. But it may not come immediately. So let's not, if we get into it, we will never shift. That's the sure. Yeah. जयदयाल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अपने क्वेश्चन को. हाँ, आप कहिए जयदयाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूटेड. जैसे बायो इनपुट बनाने वाला किसान को प्रोवाइड किया जाना चाहिए उस रूप में, जैसे बीजामृत है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, उस तरह के. Yeah, that should be done. I think there's some norm which they will allow for training, for preparation of inputs, BRC norms. That will continue. Yeah. 16th Finance Commission से जुड़े हुए अगर कोई और सवाल टिप्पणियां हो, हमने काफी ऑलरेडी ले ली. If there are any other questions, झारखंड एनवायरनमेंट एंड रिवर्स से जो साथी अपना नाम बता दें. और जोहार, मेरा नाम गुलाब चंद्र है. मेरा सवाल यह है कि प्राकृतिक खेती के लिए पशुधन की जरूरत है, गाय की जरूरत है. तो क्या 6th कमीशन में ये सब्सिडी वाली बात में क्या पशुधन, जब तक पशुधन नहीं होगा तो प्राकृतिक खेती की कल्पना करना ही बेकार है. और झारखंड में या फिर भारत में आज गायों की संख्या या पशुधन की संख्या बिल्कुल कम है, लेकिन झारखंड में आज भी प्रकृति खेती जो है, हमारा आदिवासी जो है वो करते रहे हैं और कर रहे हैं. इस अवस्था में हम कैसे प्रकृति खेती को बढ़ाने के लिए क्या पशुधन को किस तरह से फिक्स 6th कमीशन में उसको जोड़ा जा रहा है? No, as far as I understand, there will not be any, from my understanding, there can be any decision by government. There will not be any subsidy for buying cattle from the 16th Finance Commission. But for your information, Kerala is the only state where it is almost 100% hybrid. But while talking to farmers, there are enough native desi cows for natural farming for quite some time. So if you look at the national scenario, there is enough natural desi cows for the natural farming, which we are going to start. Later, of course, the schemes will come, the SHGs can buy cows,
leave it, then it becomes a circular economy. That's a later thing. Yeah. Thank you, Vijayanand जी. हर्ष पंत जी कोई एक थे, खैर उन्होंने हाथ नीचे कर दिया है. तो अब तक के अकबर भाई, रूमा, अगर आप अपना सवाल पूछना चाहें. जी नमस्कार. मेरा क्वेश्चन है कि जो टाइड और अनटाइड होते हैं उसमें कभी ऐसा भी होता है कि जरूरत न होने पर भी वो नाड़ा पंच के अंदर काम करवाते हैं, तो क्या ऐसा जरूरी है कि जरूरत न होने पर भी वो टाइड और अनटाइड जिसकी ग्रांट उसमें ही वो काम करना चाहिए या फिर पर हो सकता है? No, actually, untied means the panchayat can decide what it wants as per its functions given under the State Act. If agriculture is given, the panchayat can decide a scheme. Of course, they will give some scheme guidelines. Tied fund means they can spend it only for water management. Maybe water management, it's not clarified. It could include irrigation. That's the difference between tied and untied. The freedom to prepare the project is with panchayat. The other is within that sector only they can prepare. That's the tied. Vijayanand, there is a question on chat asking about what can be done for markets, if anything, on the 16th Finance Commission via Gram No, Panchayats. these kind of is done by government from its plan only, not from 16th Finance Commission. But 16th Finance Commission may allow construction of a market or a village kind of heart. The heart, correct. Is allowed. That may be allowed under both Finance Commission and the employment guarantee. Also, food grain storage structures, they will be allowed. Correct. And there are, FES we know is working in Odisha on heart for organic produce. There are some organizations in MP which are also doing that as well. अगर किसी और के कोई और सवाल नहीं है तो हम वेबिनार को ही समाप्त करते हैं. If there are no other questions from, sorry, स्वाति जी, आपको ट्रांसलेट पिछली 2-3 चीजें. स्वाति जी, अगर तो प्राकृतिक में बायो इनपुट तैयार करने और उपलब्ध कराने जैसे बीजामृत और घन जीवामृत के लिए किसान को संस्थागत समर्थन मिलना चाहिए. तो इसमें हमने पहले भी विजयानंद जी ने बताया है कि प्रशिक्षण, इनपुट तैयारी और सामुदायिक संसाधन केंद्र जैसे समानता नॉर्म्स प्रावधान बनाए जाते हैं. ऐसी क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रशिक्षण में मदद तो समावित किए जा सकते हैं. और हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन में भी राज्य वित्त आयोग के तहत भी पंचायतों को जो संसाधन मिलते हैं उनमें भी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में इन गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है अगर वो वैधानिक दायरे में है. तो उसके बाद में टाइड और अनटाइड फंड का अंतर पूछा गया था. तो अनटाइड पंचायत अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय ले सकती है. अनटाइड फंड में यदि राज्य अधिनियम और में कृषि विषय शामिल है तो पंचायत अपनी योजना स्वयं बना सकती है. और जो टाइड फंड है, धन केवल निर्धारित क्षेत्र जैसे जल प्रबंधन में ही खर्च किया जा सकता है. उस क्षेत्र के भीतर पंचायत योजना बना सकती है पर क्षेत्र नहीं बदल सकती. अर्थात अनटाइड में देखा जाए तो पूर्ण तरीके से लचीलापन है और टाइड में क्षेत्रीय सीमा के भीतर लचीलापन है. और बाजार के संबंध में 16वें कमीशन के तहत सीधे मार्केट समर्थन के लिए अलग प्रावधान नहीं है, लेकिन ग्रामीण हाट बाजार शेड या संरचना का निर्माण संभवतः अनुमत हो सकता है. सिंचाई एवं जल भंडारण संरचनाएं भी वित्त आयोग और रोजगार गारंटी योजनाओं के तहत अनुमन्य रहती है. उदाहरण तौर पे ओडिशा में जो ग्रामीण हाट के सुदृढ़ीकरण पर कार्य हुआ है, तो अगर देखा जाए तो वित्त आयोग सीधे मार्केटिंग को तो समर्थन नहीं देता पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना निर्माण के माध्यम से पंचायतें बाजार व्यवस्था को मजबूत कर सकती है. Thank you, Swati ji. Okay, thank you NCNF for organizing this, and request is, and Rohit particularly for coordinating, take it forward, and Swati, thank you for the excellent translation. Thank you. Okay. Thank you, Vijayanand ji. Okay, I'll take leave. Thank you, sir. Bye. All the best. All the best. Bye. Thank you, sir. Thank you everybody for joining at such a short this webinar, which is conducted at such a short notice. And most of you would be on one of the NCNF WhatsApp groups or the email group or one of the partner groups. If you are not on any and you would like to, continue
be on our email list. Please do share your email ID. एंड सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने शॉर्ट नोटिस पे जुड़ने के लिए। और ग्राम पंचायत को लेते हुए, 16th फाइनेंस कमीशन को लेते हुए क्या आगे किया जा सकता है, हम इसके ऊपर आगे एक थोड़ा एक्टिव वर्क प्लान बनाने का काम कोशिश करेंगे विजयानंद जी के गाइडेंस में। और आप लोग एनसीएनएफ के किसी न किसी ग्रुप में जुड़े ही होंगे, अगर नहीं है कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं पर, तो आपको एनसीएनएफ से जुड़े रहना है तो प्लीज अपना ईमेल आईडी जरूर शेयर कीजिए। आपने रजिस्टर किया होगा तब भी आपका ईमेल आईडी आ गया होगा हमारे पास, और हम आपके साथ ये सब चीजें जानकारी शेयर करेंगे और हम इस कार्य रूपरेखा को आगे बढ़ाए रखेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। एंड ऑन दैट नोट maybe we'll just wait for a couple more minutes। आप लोग अपने ईमेल आईडी जो लोग शेयर कर रहे हैं, and then we'll close the webinar. Thank you, Vijayanand. I'll take. Bye. Thank you, Vijay sir. Thank you, organizing team. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you to all.